एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आज हम तैयार करने जा रहे हैं हमारा प्रीएम्बल टॉपिक। अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी कि मैम प्लीज स्टार्ट द पॉलिटी सेशंस। पॉलिटी थ्रू माइंड मैप विल बिकम रियली important for all of us because polity is kind of a subject which is technical also. It is based on your understanding of the current affairs as well. So it is a mix and match subject जिसमें current and static दोनों linked है. So we want a mind map through which we can quickly revise. We have covered the chapter, but revision becomes very tricky because M Lakshmikant book, if we refer, so it is a very bulky book, right? We can understand concepts through that, but revising again becomes a little tough. So we want a mind map through which we can easily quickly navigate through the entire chapter. So I thought, why not create a mind map for all of you? एक interesting सा mind map create करते हैं आपके लिए, so that polity becomes really easy for all of you. When we talk about preamble is very important. I have created a very beautiful mind map for all of you. Preamble important बहुत है. क्यों important है? Let us understand that first. Preamble is an introductory statement. When I say that preamble is an introductory statement, what do we mean by it? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि it is introducing the constitution to you. आपको preamble एक constitution introduce करके दे रहा है. That means what is the Indian constitution? What are the objectives that we are following? What is the philosophy behind the Indian constitution? What was the intention of the people who were framing the Indian constitution? All of the core values of our Indian constitution, everything can be understood through preamble. So it is like an identity card. एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल आपके संविधान, भारतीय संविधान के लिए. ठीक है. सो व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो, यू कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड, राइट? थ्रू दैट आइडेंटिटी कार्ड वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज योर नेम, दिस इज योर क्लास, दिस इज योर सेक्शन, है ना, दिस इज योर एज, दिस इज योर एड्रेस. तो हमें पता, एंड दिस इज द स्कूल दैट यू बिलोंग टू. So basically it introduces you, है ना. Similarly preamble also introduces a constitution. Preamble भी constitution को introduce कराता है. ये point आपको यहाँ पर याद रखना है. And the source of authority of preamble, that means from where the authority is coming. Preamble में आता है ना democratic republic, secularism, socialist. What is the source, the root from where the authority is coming? It is you guys, people of India. भारतीय नागरिक ही प्रियम्बल के अथॉरिटेटिव सोर्स हैं. इन्हीं के लिए तो संविधान बनाया गया है, हमारे लिए ही संविधान बनाया है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. प्रियम्बल navigates the source of authority through the people of India. Now let us understand what are the core components of preamble. Preamble के core components क्या होते हैं ये समझ लेते हैं. देखो, very important. Sovereign, पहली बात तो sovereign nation, that means the boundaries that we have, our boundaries, India's boundaries, they are under our control. We are, no other nation, no external force is controlling our boundary. कोई भी external force हमारी boundary control नहीं कर रही है. ठीक है. तो that is sovereignty. We have utmost control of our boundaries. Socialist, we are working for the society, socialist nation. Secular word was added, socialist word was added later on. Secular means no one religion is bigger than the other. सारे religion एक समान है. Every religion is same. Every religion is equally important and equally respectful. And democratic republic, that means you and I have a say when we are electing our representatives. We have our fundamental rights, we can express ourselves. ये democratic republic है. These are the core components of preamble. Every year there is a question on preamble. ये अपने आप में एक 8 नंबर का चैप्टर हो जाता है. This is an 8 marker chapter. Do you know it? 4 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे ही आएंगे इस टॉपिक से, एवरी ईयर आते हैं. ठीक है. Now let us understand when was the foundation of preamble laid down. When we talk about foundation, it was not laid down after independence or just before the independence. No, it was laid down when Jawaharlal Nehru ji, he proposed the objective resolution. British government wanted to know ki what our idea is about the constitution, about ruling our own self, about Swaraj. So Jawaharlal Nehru created the objective resolution, presented the objective resolution, and from there we got the idea of having a preamble, because objective resolution में our objectives for our constitution were presented. सेक्युलरिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एटसेट्रा, ये सारे जो आप कोर कंपोनेंट्स देखोगे ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन थे. और इसीलिए यहीं से हमको आइडिया मिलता है एक प्रीएम्बल का
कि प्रियम्बल होना चाहिए. If you are not able to study the entire constitution, at least you can know what the constitution is through the preamble, है ना. That is why in NCERT the starting page contains a preamble, so that every student from the school time only, the school time itself, can understand what a preamble is, what his or her constitution is all about. Okay, so our preamble was adopted on 26th of November 1949. 26 नवंबर 1949 को preamble को adopt किया गया था. What are the objectives of preamble? First objective is to secure justice for its people, whether it is economic justice, social justice, political justice. सब justice और fairness को ensure करने के लिए preamble को establish किया गया. Then liberty is the objective. Everyone should be given liberty of his or own behavior or lifestyle, but yes, it is restricted, not at the cost of other people, right? इक्वालिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वालिटी रहे, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वालिटी है या सोशल इक्वालिटी है. फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, द फीलिंग दैट वी आर वन. जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, व्हेन यू सी एन इंडियन इन अ फॉरेन लैंड, यू फील वेरी होमली, राइट. आप, you know, the other person is might be a stranger, but you will, you know, gel up with that person very easily because वो इंडियन है, आपका एक रूट सेम हो जाएगा, है ना. तो वो ब्रदरहुड की फीलिंग बेसिकली मेंटेन्स इंटेग्रिटी एंड यूनिटी इन द नेशन. सो दीज आर द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रियम्बल दैट यू शुड नो. ये कोर एस्पेक्ट्स है प्रियम्बल के जो आपको पता होने चाहिए. सो प्रियम्बल इज रिफ्लेक्टिंग द कोर वैल्यूज ऑफ द नेशन. हमारे भारत नेशन के, भारत देश के जो कोर वैल्यूज हैं, जो हम फॉलो करते हैं, हमारे मॉरल्स हैं, वो प्रियम्बल में लिस्टेड है. इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जो हमने अभी पढ़े हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. इन्हीं के ऊपर से एक एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है. 10 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे. ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द प्रियम्बल व्हेन दे वर एडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पढ़ना और जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस वॉज योर सेशन ऑन प्रियम्बल. अगर आप चाहें तो इस माइंड मैप का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यू कैन सेव दिस स्क्रीनशॉट एंड यू कैन प्रिपेयर इट, when you are revising the chapter preamble. That was all for today. Thank you so much everyone for participating in the class. I really enjoy making complex things easy for all of you. Namaste.